नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इजराइल की तरफ से ईरान पर जिस तरीके से हमला हुआ सबने देखा, तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई और उसके बाद ईरान ने भी 8-10 घंटे के अंदर अंदर जवाबी कार्रवाई कर दी। इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें बताया गया कि 78 लोगों की मौत हुई, जबकि ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं बीती रात, उसमें बताया जा रहा है कि एक इजरायली महिला की मौत हुई है। तेल अवीव के आसपास के इलाकों को क्षति पहुंचाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इजराइल ने कैसे अटैक किया। इजराइल ने अचानक से मिसाइलें दाग दी और बताया जा रहा है कि जो साइंटिस्ट न्यूक्लियर बम बनाने की फिराक में थे, उन 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके परिवार समेत खत्म कर दिया, उनके घरों को उजाड़ दिया। बदले में ईरान कहां चुप बैठने वाला था और इसका अंदाजा इजराइल को था। शायद इसीलिए इजराइल के पीएम कह रहे थे कि हम भी इस चीज के लिए तैयार हैं, बदला तो वहां से लिया जाएगा। खबरें तो यह भी आई कि इजराइल में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, एयरबेस को बचाया जा रहा है और ईरान ने बहुत ज्यादा देर किए बिना 8 से 10 घंटे के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी और तेल अवीव के आसपास के इलाकों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। जो इजरायली पुलिस है उसने इस बात की भी पुष्टि की है कि हां, एक इजरायली महिला की मौत हुई है। अब ईरान को भी कई देशों का समर्थन प्राप्त है, इजराइल के साथ भी कई सारे देश हैं, तो दोनों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। दोनों में से कौन ताकतवर है, यह भी हम आपको लगातार बता ही रही हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं, कोई भी कमजोर नहीं है। जो लोग ईरान को कमजोर समझने की कोशिश कर रही हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जंग चल रही है ईरान और इजराइल के बीच और पाकिस्तान के एक पत्रकार ने आगे आकर कह दिया है कि अगला टारगेट इजराइल का हम भी हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान भी हो सकता है। पाकिस्तान के ये जाने माने पत्रकार हैं जिनका नाम है हामिद मीर, और वो अपने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान एक अलग ही आशंका जताते हुए नजर आए हैं। वो कहते हैं कि इजराइल पहले भी पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश कर चुका है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इस बार भी मौजूदा हालातों में वो हमारे ऊपर अटैक कर दे। हामिद मीर ने कहा कि अगला निशाना इजराइल का पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालत में पाकिस्तान अगर चुप बैठता है तो ये बड़ी गलती होगी। हम चुप नहीं बैठेंगे और ऐसी किसी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब एक तरफ इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है, बीच में कूद गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि अगला निशाना हम भी हो सकते हैं। लेकिन क्या ये बयानबाजी पत्रकार की तरफ से हवा हवाई है? ऐसे ही हुई है? ऐसे तो नहीं हुई होगी। अब इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझिए। इजराइल ईरान पर हमला करता है और फिर जवाबी कार्रवाई को भी झेलता है, और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फोन मिलाते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनसे बात करते हैं और मौजूदा स्थिति का उन्हें पूरा सारी चीजें बताते हैं, पूरा ब्यौरा उनको देते हैं, जानकारी देते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर जानकारी देते हैं कि ऐसे ऐसे उनकी बात हुई है बेंजामिन नेतन्याहू से और हमने उनसे कहा है कि आप शांति और स्थिरता की तरफ बढ़िए। वैसे भी भारत शांति प्रिय देश रहा है, ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर जोर देकर बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। जबकि नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के साथ साथ दुनिया के कई देशों के दिग्गजों से बात करते हैं फोन पर और उनसे आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ आइए। सिर्फ यही नहीं, जनता के नाम भी बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश दिया है। वो कहते हैं ईरान की जनता से भी कि आप इस्लामिक सत्ता का बहिष्कार कीजिए और हमारे साथ आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। बहरहाल इन सब के बीच एक बयान नेतन्याहू का वायरल हो रहा है जिसमें वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। זכות בלעדית שאני דיברתי עם מנהיגים, דיברתי עם ראש ממשלת הודו מודי, ידידי נרנדרה מודי, עם ידיד נוסף קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, וגם עם מיודענו שעזרו לנו בעבר, נשיא צרפת מקרון וגם ראש ממשלת בריטניה סטארמר, ואני בהחלט שמעתי מכולם את אותו הדבר. הם מכירים בזכותנו להגנה עצמית, להגן על עצמנו מפני איומים קיומיים. כל אחד מבין את זה, הם מבינים את זה, ואני אשוחח כמובן גם עם אחרים, עם הנשיא פוטין וגם מנהיגים אחרים. नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मेरा दोस्त भारत मेरे साथ है
और इसी के साथ बाकी देशों के दिग्गजों के साथ भी वार्तालाप को वो बढ़ा रही हैं और अपने साथ आगे आने का आह्वान कर रही हैं। इससे पहले भी नेतन्याहू का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो ट्रंप को शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए थे। क्या कुछ कहा था बेंजामिन नेतन्याहू ने और किस तरीके से ये इशारा कर रहा है कि अमेरिका भारत जैसा देश इजराइल के साथ है। अब आप सुनिए नेतन्याहू के बयान को और फिर इस खबर पर क्या राय रखते हैं। पाकिस्तान के पत्रकार के दावे पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel
and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.